अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? जी, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। सर कैसा रहा आपका वीक पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप लोग सुनाइए, हर तरह खैरियत रही आपके यहाँ? यस सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। गुड। सर वालेकुम अस्सलाम। सर वास्सलाम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। आप सर, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत। तो आज आप लोगों ने मेल नहीं की हुई, स्वाय तहमीना शफ़ी कौन है हमारी? तहमीना शफ़ी हैं कोई? सर एक्चुअली आपने बोला था ना कि हम वही स्लाइड्स यूज करेंगे जो आपने दी थी, दैट्स व्हाई मैंने तो वही यूज की हैं, उन्हीं को इलेबोरेट करूंगी। तो वो किधर हैं? मुझे तो देनी थी, मैं उन्हें अपलोड या सर वो वालेकुम अस्सलाम। स्लाइड्स मुझे तो सेंड करनी है ना, कि मैंने, या मैं उन्हें बस? सिर्फ हाँ हाँ, सिर्फ फोकस ग्रुप रिसर्च डिजाइन की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी हम वही करेंगे आज। वही करेंगे। आपने Yes, कितना हिस्सा करना है उसमें से? सर मैं एप्लीकेशन तक जाऊंगी और उसके बाद फिर प्रॉस और कॉन्स जो हैं वो तहमीना शफी जो हैं वो डिस्कस करेंगी। ठीक है, जितना करना था आपने अपनी स्लाइड्स उनमें से बना, इस तरह तहमीना शफ़ी ने बनाई हुई है। बात नहीं समझ आई? सर अभी समझ आई है। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं सर आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने भी मेल की थी सर, साजिद अली के नाम से। हाँ बिल्कुल है, और मैं वो समझता रहा कल लिटरेचर वालों का, बल्कि उन्हें डांटता भी रहा कि कौन है आप में साजिद अली। तो वो एक साजिद जावेद अच्छा। था, साजिद जावेद था, वो कहता जी मैंने तो दो नहीं सेंड की। तो मैंने उसे डांट दिया कि तूने दो सेंड की हुई है, एक साजिद जावेद के अच्छा नाम सर। से और एक साजिद अली के नाम से।
तो पहले गलती से सर वो पर्सनल आईडी से सेंड हुआ था सर, फिर बाद में मैंने सीएमएस वाला सेंड कर दिया। साजिद अली, मैं ये कॉपी करके उधर ला रहा हूँ इधर। तो अच्छा अच्छा हो गया ये भी, वरना मुझे उस पर रहना था कि इसने 2 दफ़ा क्यों किया हुआ। ठीक है, सही हो थैंक यू गया। सर। तो अभी फिर स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। अच्छा, इस तरह है कि प्रेजेंटर जो है ना अपनी वीडियो ऑन करें, ताकि उनका वे ऑफ प्रेजेंटिंग और कॉन्फिडेंस भी ज़रा पता चले। उसमें कोई हर्ज नहीं है, मसला कोई नहीं है उसमें। अगर कोई नकाब करते हैं आप में से फीमेल, तो वो अपना ठीक है, वेल रखें, वो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अपना वीडियो ज़रूर ऑन करें आप। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आप सर अपने नाम से नहीं आई? जी सर, सॉरी, फर्स्ट टाइम ऐसे एक्चुअली मेरा मोबाइल की सेटिंग में कोई इशू है, इसीलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं फिर आप चलें, के ठीक नेम के साथ नहीं है। सॉरी। ठीक ठीक। हाँ, कितने लोगों का था नाम आयशा, बताओगी आज प्रेजेंटेशन के जी लिए? सर, 5। जी सर, 5 प्रेजेंटर्स हैं आज। मारिया मकसूद हैं, अनम शहजादी हैं, तहमीना शफी हैं, साजिद अली हैं और अजहर अब्बास हैं। ये 5 हैं। अच्छा, लेकिन मुझे जो ईमेल आई है वो सिर्फ साजिद अली और तहमीना शफी की आई है, बाकी लोगों की नहीं है। जी जी तो पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आई बात की। मैंने कहा था कि स्लाइड्स मेरे वाली यूज़ करने का मतलब ये था कि वो कंटेंट ले लें, प्रेजेंटेशन जी अपनी बना लें। अगर मेरे सही। वाली स्लाइड ही पढ़नी है तो आपने उसमें क्या मटेरियल डाला, क्या ऐड किया, मुझे ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ। हम इसको शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सो दिस इज़ आवर 13th वीक, and today we have 5 presenters, 5 or 6, as 5 Aisha सर। was 5. 5 सर, 5%। Yes, yes. I think so. First, we should start from Sajid Ali. Sajid Ali, as I earlier asked, you have to present with the video on. आप नजर आने चाहिए बात करते हुए। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, ये I have to pray in third number, sir. That's why I didn't on my laptop. So if you are telling me to start at first, sir, then I will have to on my laptop, sir. So it will take 5 minutes. no problem, you are welcome. Thank you, sir. अभी ये स्लाइड नजर आ रही है अपलोडेड इनकी सामने, इंटरव्यू मॉडल मेथड रिसर्च? यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। मीन टाइम हम कोई और काम कर लेते हैं इनके लैपटॉप ऑन करने तक। तहमीना शफ़ी हैं? तहमीना, आप हैं क्लास में? ओके, तहमीना नहीं है क्लास में। और आज के प्रेजेंटर्स में जो लोग हैं वो अपने वीडियो ऑन करें। हेलो, यस सर। आज के प्रेजेंटर्स जो अभी तक मौजूद हैं क्लास में, वो अपने वीडियो ऑन करें। यस सर। दिस इज़ मारिया मकसूद। और जी, और कौन है?
अच्छा मारिया, आपका क्या टॉपिक था? वीडियो ऑन रहने देना भाई, क्या मसला है? सर मेरी ऑन है। अब ऑन हो ये। सर मैंने फोकस ग्रुप को ही डिस्कस करना है। यस सर। फोकस ग्रुप को आपने डिस्कस करना है, तो आपने स्लाइड्स नहीं भेजी तो मैं यहाँ से खोल लूँगा, तो आप जो नई चीज़ बीच में ऐड करना चाहोगी कैसे करोगी ज़ुबानी? यस सर, मैं उसको एलेबोरेट करूंगी। मैंने तो ऐसे ही प्रिपेयर किया था एक्चुअली। नहीं, ये तो मैं आपको स्लाइड्स भी बना के भेज दूंगी सर। ये तो पहले आज बना मैं लेते उसको ना, यहाँ शेयर होती, यहाँ लोग उनको पढ़ते सुनते, कोई बात यस करते। सर। तो मुझे नहीं समझ आई कि आपको कैसे ये आइडिया आया कि बस मैं उधर ही बोल दूंगी। हाँ? सर वो एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किस मुझसे। किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? आज हमारा तीसरा वीक है, लोग अपनी स्लाइड्स लेके आते हैं और यस सर, वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं आपकी आपकी स्लाइड्स में एडिशन नहीं कर सकती, तो मैंने वो बनाई ही नहीं इस वजह से। लेकिन इसको मैंने हर पॉइंट को कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर सकूं। भाई एलेबोरेटेड ज़ुबानी कलाम ही नहीं होता, कोई लिखा मटेरियल होता है, उस मटेरियल को लोग देखते हैं फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। आपकी बात पे कोई कैसे क्वेश्चन करेगा आपने क्या ऐड किया है? मेरा ये क्वेश्चन है। यस तो सर। और कौन है जी, और किन्होंने करना है? आज तहमीना अभी भी नहीं आई क्लास में। साजिद जब आप ऑन हो जाएं तो बताइएगा। ओके सर। और अभी तक कौन कौन से लोग हैं जो प्रेजेंट कर चुके हैं प्रीवियस डेज में, जिन लोगों ने? सर मैं अस्सलाम वालेकुम सर। वाशराम, प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें ताकि अंदाज़ा हो कौन लोग हैं। ओके सर। जी। दिस इज, हु इज दिस? सर माय नेम इज शाजिया लतीफ। शादी, आपका क्या टॉपिक था? आपने किस पे किया था प्रेजेंट? सर ऑफरिंग टेबल एज अ रिचुअल लैंडस्केप। ऑफरिंग ऑफरिंग टेबल्स एज अ रिचुअल लैंडस्केप इन एशियन इजिप्शियन मैगिका मार्टिया मैगिका। ओके 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 ओके, वो जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक, और कौन? जी, और जो अभी तक प्रेजेंट कर चुके हैं? ऐसा आपने भी तो किया था। हेलो, जी जी सर। आप ही अपनी वीडियो ऑन करें ना, सबसे हम कह रहे हैं तो। जी जी सर, अभी मैं करती हूँ। अक्सर अरशद, आपका क्या था टॉपिक? अक्सर म्यूट है, आपका माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका टॉपिक क्या था? सर अभी तक मुझे टॉपिक असाइन नहीं हुआ। मैंने चूंकि लास्ट टाइम मेरे नेट का बहुत इशू हो रहा था तो मैं कनेक्ट भी नहीं कर सकी, यानी कि वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा था। तो मैंने तो आपसे कहा था शायद मेरी आवाज वॉइस ऑडिबल नहीं थी, तो इससे मुझे कोई टॉपिक असाइन नहीं हुआ था। ओके ओके, अच्छा, और कौन कौन अभी तक कर चुका है प्रेजेंट? साजिद आप शुरू करें जी, मेरे खिलाफ ऑन हो यस। गए। ओके सर। ठीक है, बाकी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें और प्रेजेंटर का वीडियो ऑन रहना चाहिए। स्टार्ट करें साजिद। Okay, sir. Bismillahirrahmanirrahim. The topic that I am going to discuss today
that is interview method in research. Now the first thing that we have to discuss that is the introduction portion, that what actually interview is. So basically here I jot down 3 main points. As you can see in the first point, that it's a sort of process of communication. That means that interview is basically a source of communication that take place between two people. That is, one is asking question and another is answering their questions. So that means that it's a process of communication. One is the interviewer and another one is the respondent. Now, what should be the aims of, what should be the purpose of interviewing someone? So the main purpose or the main aim behind conducting an interview, that is to collect a specific information about a certain topic or a social phenomenon. Now, another aim of conducting interview is that it makes your research possible. Without interviewing someone, you cannot reach to the conclusion of any social phenomenon. So in order to deal with a social problem accurately and appropriately, you must have to conduct an interview with regard to a particular problem. Next, sir. Now here you can see uh, the definitions of interview. So according to McNamara in 1919, I just picked this slide from our respected sir. He gave us a slide. So my all content is based on the slides which were given by our respected sir. So interviews can be defined by many ways. Here, McNamara in 1919, he has defined that interviews are particularly useful for getting the story behind a participant experiences. So that means that interviews are basically, a way to get a hidden story, that every individual in a society, he has experience or she has experienced uh, some sort of, he has a unique and distinctive kind of experiences with regard to any particular problem. So when you are entering into a field, and when you are to interview someone regarding to their problem, that means that they are going to share their experiences with you. So this is what we get the definition from McNamara. And the interviewer can pursue in-depth information around the topic. There are always two types of surfaces behind any problem. The first one is the apparent surface, that you can discuss the problem apparently. And another is the in-depth information, that you have to extract it. It's a kind of deep kind of information. So you have to extract it by interviewing someone. So this is what an interviewer do with the respondent, that he asks questions in such a way that he is able to communicate, he is able to convey the in-depth information to the interviewer. Now there are many types of interview: personal interview, telephone interview, focus group interview, depth interview, and projective techniques. Now we will discuss what personal interview is. Personal interview is a face-to-face kind of interview, that your respondent should be sitting in front of you and the interviewer is going to ask some question. So this is a kind of face-to-face communication, two-way communication, as one will be the asking question and another will be replying the question. Now another thing is the plan, manner, and structure interview. That means that an interviewer always have a kind of proper structure, that he is going to ask this, and this question at that time, and he will reach to a conclusion by following the structure that he has in his mind while interviewing someone. एक मिनट And साजिद, एक मिनट। अनम शहजादी, yes, sir. आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना है आपने? अनम शहजादी, do you want to say something? Carry on. Sajid, carry Okay, on. sir. Okay, sir.
So an example, we have door-to-door interview, that when you enter into any field, obviously you choose a particular respondent from any field, and then you are supposed to ask a question to that respondent, and he is expected to answer your question. So by following a two-way communication, your interview will reach to a conclusion. Next, sir. Now there are several methods of conducting personal interview. The first one is sir, next. Yeah, the first one is rapport building. Exactly, the first thing while asking or while conducting an interview, the first thing that a researcher must keep in his mind is the rapport building. That means that you have to make a certain sort of relation with your respondents. Without making this relation, you will not be able to get a data, or you will not be able to conduct an interview. So rapport building is the relation that can be built when you enter into a field. So this is the receptiveness of respondents and pleasure rather than ordeal. That means that a person that you are going to interview, he is willing to answer your question, he is willing to provide you data. So he shows a kind of receptiveness. So he is going to accept you. So it depends on the researcher that how he deals the respondent, how he make a sort of effective kind of relation with his respondent, so that he will easily provide information regarding any particular topic. Second thing is the introduction. Obviously, you have to, whenever you enter into a research field, you have to introduce yourself in a proper way. That you have to tell your name. You are also supposed to your purpose for being there, and you must have a kind of official letter that will grant your presence there, and studies legitimacy, that you are going to show that my purpose of conducting research is this and that, and the information that you will be providing, that will be a kind of confidential thing. So my studies legitimacy means that I have been authorized to study in your area. So this is what you have to do in your introduction portion. Next, sir. See, another point is probing. Here, the points that include is encouragement, free response, and complete and relevant answer. Sometimes it happens that while interviewing and while answering the question, the respondents might feel hesitation, and they might be afraid of giving answers. So at that time, it is up to the researcher that he has to encourage him. He has to encourage him while taking pauses, while adding some information to the words, the previous words that the respondents has liked, and he the researcher also has to show a kind of uh, agile behavior or a free response, that he has to deal the respondents in such a way that he will be feeling free to answer his question, and complete and relevant answer. So when the researcher will be when the researcher will be cooperating with the respondent, at that time the respondents will be able to answer the questions in a relevant way. He will not he will not answer in an inappropriate way, rather he will give the complete and relevant answers to the researcher. So this is what we call probing. Another method is recordings. Obviously, whenever you enter into any field, you have many mediums and various methods to record your information. So you can use audio visual aids, and you can also make your own notes like writings and taking notes. And the recording can be done meanwhile during the interview or after an interview. During an interview, you can write down some main points. You can also take audio visual aids.
And after an interview, whatever you have understood and whatever you have extracted from the information, you may record it. This is recording. Next, sir. And closing. Obviously, it's a complementary section in which you thank the respondent for his cooperation and assurance of confidentiality. This is the main thing that you have to do with your respondent, that the data, that whatever data he will be providing, that will be a secret one, that will be a confidential thing. It will not be disclosed to anyone. So this is what we do in closing. Now, another method is telephone interview. As the name itself is referring that the interview that can take place on phone or telephone, that is telephone interview. So interview done on phone, in which you have to ask question to the respondents on phone, and obviously definitely he will be answering your questions on phone. So telephone, smartphones and internet, these are the latest, internet is the latest medium of conducting telephone interview. Next, sir. Third one is focus group interview. So it's a kind of unstructured interview and discussion specific topic. Focus group interview is an unstructured interview, unlike personal interview, because in personal interview we have to be structured. We have a structured kind of interview, but in focus group interview you have to be unstructured. That means that you are not specified to a certain question. Rather, it depends on the context and it depends on the situation in which you will be asking question, and whatever the situation may lead to a certain way, you will be asking question and the respondents will be answering question in different manners until you get to a conclusion. So you will be discussing on specific topic in order to mold your respondents on a specific topic. So this is what we do in focus group interview. Now there are 10 advantages of focus group interview. Sajid, Sajid, Yes sir. Yes sir. माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है और बहुत अप टू मार्क और अप टू द फॉर्मेट आपने इसको बनाया हुआ है, लेकिन ये बहुत लंबी है। 14 स्लाइड्स हमने पढ़ ली हैं, अभी 18 बाकी 18 बाकी हैं। तो किसी और को मौका दें, हो सकता है किसी और ने भी यही पढ़ना हो। ओके सर, ओके सर, देखिए सर। Anam Shahzadi, you raised hand. What you want to say? You can unmute your mic and talk. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना इंटरनेट इशू था और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो मेरा ना अभी कनेक्ट हुआ है। और मेरी आज प्रेजेंटेशन है सर, मैं बहुत परेशान थी कि शायद आप मुझे कॉल कर रहे हूँ और मैं अटेंड ज्वाइन नहीं कर पा रही। अभी ज्वाइन कर लिया आपने? यस सर। कंफर्म है आपने ज्वाइन कर लिया हमें? यस सर, अब तो सही है सिग्नल। लेकिन आपने अपनी प्रेजेंटेशन नहीं भेजी हुई ना, तो क्या करोगी प्रेजेंट? सर मैंने मेल की हुई है। कब की है? कब की है? मैंने मेल कर, सर मेरा ना एक्चुअली इंटरनेट इशू था और मैंने ना आज मॉर्निंग में की है। मैं रात को आपको करने वाली थी लेकिन वो हो नहीं रही थी और मैंने मॉर्निंग में किया। अभी 9:05 पे मैंने ईमेल चेक की है, मुझे कोई ईमेल नहीं मिली। नईम काजी, आप कुछ कहना चाहते हो? सर मैंने सेंड की हुई है लेकिन मैं दोबारा कर देती हूँ। अनम शहजादी, अब आप खामोश हो जाएं और ईमेल कर सकती हो तो अभी करें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम बताइए। Sir, I want to comment on this very presentation, sir. Good. Welcome. Welcome. Sir, it's an amazing presentation done by our respected fellow Sajid Bhai, sir. Amazing. Sir, इसमें ये थी कि रीडिंग ज्यादा नहीं थी सर, सिर्फ की पॉइंट्स थे और elaborated by our respected fellow, sir. उसने बहुत elaborate किया और उसने रीडिंग नहीं की। यस, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और बड़ा मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसको कहूँ कि आप बस करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत वाकई इनफैक्ट मीनिंगफुल है, टू द पॉइंट है, रेलेवेंट है और अच्छी प्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं इस वो रेपिटेशन के डर से कह रहा हूँ कि और भी किसी ने यही करना हो तो बार बार ऑडियंस थक जाती है कि अच्छा एक ही बात बड़े लोग कर रहे हैं। तो साजिद, अगर
कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा अच्छा था सर. Sure. He must be Yes, sir. appreciated for that as well. Thank you आशा, गुड. तो साजिद हम अभी रुक लेते हैं, किसी और को आने देते हैं. अगर किसी ने इसको ना किया तो एंड पे फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करवा देंगे. Sure, sir. Sure, sir. हाँ, 617 स्लाइड से आपको दोबारा हम मौका देंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे, और अगर वाकई इनको कंटिन्यू किया जाए तो हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा. क्या आप लोग कहते हैं कि अभी से ही कंटिन्यू करें, चलते जाएं? यस सर. यस सर. ठीक है, साजिद आ जाओ. साजिद, Okay, sir. आपकी डिमांड है भाई, माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया हुआ है. ठीक है, Okay, sir. कंटिन्यू करो. So there are 10 advantages of focus group interview, and it has been termed as 10 S's, as we got from the slides that has been given by respected sir. So the first one, synergism. It means, as you can see in the image, that stronger together. So that means that interviews basically in the first very lines, while having an introduction of interview, we came to know that it is a two-way communication. It is a process of communication that takes place between two people. So synergism means that cooperation, greater effects and results. That means that the interviewer and respondents both have to cooperate with each other. So in doing this, they will get an effective results of their problem. They will deal the problem and they will deal with the questions in an appropriate way. So this is what we call synergism. Next, sir. Snowballing. Initial state of small significance and larger understanding and importance upon itself. So snowballing is basically, the term has been, as you listen and as you encounter with your daily life, that when snowfall occurs and the children that are playing in the fields, they make, snowballs. At first, the size of the ball is very short, but when they keep on rolling it, it becomes much larger. So the same situation happens within the context of interview, that at initial level, the interviewer asks question in such a way that with the passage of time, the results and the context of the interview, it becomes much more larger, and the level of comprehension and understanding also get to a larger extent. So this is the reason it has been termed as snowballing. Another thing is stimulation. It includes your encouragement, being more active, and to get the things done. So again, you have to stimulate your respondent. The researcher must stimulate his respondent in order to encourage him, so that he will not be stuck at any point while answering the questions. So when you give encouragement to someone, at that time the respondent becomes more active and the things get done more easily. So this is the advantage of stimulation. Another thing is security. Another advantage of focus group interview is security, free of worries and ease of communication. Exactly, when you introduce yourself in a proper way, and when you assure him, and when you show your studies legitimacy, and when you have a proper kind of introduction in any novice kind of field, at that time the respondents or the people who were unknown to you now become start to be knowing to you, and they become known to you, they become familiar to you. So in this they will have a feeling of security, and they will be free of worries, and your process of communication will be flowing in a linear way. So this is upon the now spontaneity, giving response suddenly, actively and attentively responding. So that means that when you have a good kind of rapport building, and when you have a good kind of relation, when you feel that now you have built a certain relation with your respondent, at that time the respondent
becomes more agile, he becomes more active, and he is willing to respond your questions in a sudden way. He is not going to stuck at any point, rather he is going to answer your questions within no time. So both the interviewer and respondents will be actively participating in the process of communication. So this is spontaneity. Another advantage of focus group interview is serendipity. So the development of events and information and pleasant communication. Now, while discussing the certain topics, sometimes you have to, change your way in other directions, so that while in doing this, the respondent will unconsciously, provide you the in-depth information. So you have to develop some new events and information uh, with relevant to the certain topic that you are going to discuss. So when you will do this, it will be having a kind of pleasant communication, and the respondents will not feel a kind of boredom. They will not get bored, and the process of communication will be a pleasant one. This is serendipity. Another advantage of focus group interview is specialization. So the focus on the set and answers, being more concerned with the interviewer. Whenever the researcher, the interviewer asks question, the respondents becomes focused. He just emphasized and he just focused on the set and ask words of interviewer, and he shows more concern towards the interviewer. So he shows more concern towards the questions of interviewer, and he becomes more concerned. And when he becomes more concerned, when the respondents become more concerned, that means that the researcher or interviewer is now going to collect the information, the best and the effective one. So this is what we call specialization. Next step. Scientific scrutiny means you have to analyze something. Obviously focus group interview is a kind of scientific scrutiny. You have to analyze the things, you have to reach to a conclusion in a scientific way. So in doing this, you will be able to have a fair evaluation of ideas, and you will be developing multiple ideas, and at the last you will have a kind of systematic analysis, because you follow a certain kind of scientific procedure. And when you follow a scientific procedure, that means that you are evaluating the data in an accurate and effective way. Another S benefit of focus group interview is structure. So construction, arranging, and making relation of different aspects. So again, this is another benefit of focus group interview, that you have the researcher has to construct different ideas, and at that he has to arrange the ideas as well, and making relations of different aspects. So you will be narrating different stories, you will be linking different events related to the topic, and in doing this, you will be the researcher will be able to making relation of different aspects to a common point. Your epicenter or a particular problem will be same, but the angles and the dimensions of discussing the problem, that could be different. So this is how we deal in structure. Another thing is speed. Less probability of intervention, getting the things done quickly. Obviously when you are sitting in front of your respondent and you are conducting an interview, and you have also built a good relation, and you have also built a trust level between the respondents and the interviewer,